स्टेट वेदर ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है आपका, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डबल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है डबल हो जाती है अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डबल हो जाए। ठीक है, हमें पता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम उसका जो अगर रेट एक्सप्रेशन लिखे वो होता है के मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेट सपोज रिएक्टेंट क्या आपका ए है और ए के पावर क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपका यहाँ पावर होता है क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसके रिएक्शन के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, लेट सपोज अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दिए मतलब 2A कर दिए, ठीक है, इसके कंसंट्रेशन को, तो जो अगर न्यू रेट अगर लिखे हम दैट इज आर डेस अगर लिखे तो क्या हो जाएगा आपका के ए 2A। ठीक है, पावर 1, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 2K मल्टीप्लाइड बाई ए के पावर 1। और ये के क्या है आपका, ये आर है, तो ये क्या होगा, जो आपका आर डैश हो गया किसके इक्वल हो गया, 2R के इक्वल हो गया। जो न्यू रेट आएगी क्या होगी, वो डबल होगी प्रीवियस रेट के। तो अगर हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या डबल हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है द ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट डिकम्पोजिशन, मतलब ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। ठीक, ऑर्डर अपने को पता चल गई, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट। ठीक, द टाइम टेकन ऑफ इट्स डिकम्पोजिशन ऑफ 1/8 एंड 1/10 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन आर टी 1/8 एंड 1/10। ठीक, जो मतलब टाइम टेकन दिया गया है वो दिया गया है कि जब 1/8 डिकम्पोजिशन हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन का और 1/10 हो जाता है, तो ये है, ये दोनों दिया गया है। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 1/8 एंड 1/10 इंटू 10। ठीक, और log 2 की वैल्यू अपने को बेस 10 पे दी गई है। तो देखो अपन लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ से देखो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, के टी इक्वल टू ln ए नॉट अपॉन 80। ठीक, तो अगर ये वाला फॉर्मूला अपन लोग यूज करें तो पहले वाले के लिए लिखेंगे k इंटू टी, कितना 1/8 लग रहा है, ये ए नॉट रहता है और कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है डिकम्पोजिशन 1/8, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट बाई 8। तो यहाँ से आंसर ये सॉल्व करेंगे तो ए नॉट कट गया, ln 8 आ गया, डन। ये पहला इक्वेशन अपन ने मान लिया। अब दूसरा इक्वेशन लिखें तो k इंटू टी 1/10 दिया है टाइम, ln कितना हो जाता है ए नॉट का 110 हो जाता है, मतलब 10 हो जाता है 1/10 डिकम्पोजिशन। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ln 10, ये दूसरा। अब अपन लोग दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, t 1/8 अपॉन t 1/10 क्या 1/10 इक्वल टू ln 8 अपॉन ln 10। ठीक, ln 8 अपॉन ln 10, अब अपन लोग इसको log में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा log 10 2 की पावर 3, ठीक, अपॉन 2.303 हो जाएगा, और इधर से भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 2.203 आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 10 बेस 10। ठीक, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू log 2। ठीक, तो अपना आंसर यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो t 1/8 और t 1/10 इक्वल टू आ जाएगा 3 log 2। ठीक, 3 log 2 की वैल्यू अपने को 0.3 दी है, तो 0.3 इंटू 3 मतलब 0.9। तो अगर अपन लोग इसको और सॉल्व करें तो 1/8 और t 1/10 हो जाएगा, इधर अपन लोग 1/10 लिख देंगे इसको, तो 10 इधर आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। और देखो अपने को यही सॉल्व करना था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो अपनी 9 आएगी, आंसर हो गया ये अपना। ये देखो यहाँ से अपने को क्या फाइंड करना था, यही। ठीक, इंटू 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ये आ गया अपना आंसर। यहाँ पे मैंने कुछ लॉ के फॉर्मूले यूज किए हैं। देखो, जब ln से अपन लोग ln, मान लो ln होता है log e बेस अगर 2 लिखा है, ठीक, बेस ही है,
तो इसको हम लोग ln2 भी लिख सकते हैं। और अगर इसको अपन लोग को log में कन्वर्ट करना है तो log में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। किससे? अपन लोग इसको डिवाइड करते हैं 2.303 से। क्यों? क्योंकि देखो ln2 की जो वैल्यू होती है, ln2 की वैल्यू होती है 0.693 और log 2 मतलब ये हो गया log बेस 10 पे, ठीक, 2। इसकी वैल्यू होती है 0.301, ठीक। तो 0.230 से अपन लोग डिवाइड कर लेते हैं जब ये चेंज करना रहता है। और देखो यहाँ से log अगर 10 बेस पे 8 लिखा है तो इसको अपन लोग लिखते हैं log 10 टू की पावर 3, और 3 यहाँ से अगर आगे आ जाएगा 3 log 2 10 बचेगा, ठीक। ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज की हैं। अपना आंसर तो 9 आ ही गया है। Hello everyone, let us solve this question. The question says 2x gives 3y plus 2z. Here we have been given the data of time versus partial pressure of reactant X. Assuming the ideal gas condition, we have to calculate the order of the reaction, rate constant, time taken for 25% completion of reaction, and total pressure when partial pressure of X is 700. So here we have been given a reaction 2x gives 3y plus 2z. So initially at time t equals to 0, the partial pressure of reactant X at time t equals to 0, the partial pressure of reactant X is 800. And initially there will be no product formed, so its concentration will be 0. At time t equals to, at any time t equals to, let's suppose, at any time t, how much amount of X will be converted to product? If we assume that small x amount of capital X reactant, small x amount of reactant X is converted to product. So this will be at some time t. What will be the concentration of X? It will be 800 minus 2x, and the product concentration of Y will be 3y, and Z will be 2x. Assuming that small x amount of reactant A converted to product. So now let us equate this for time t equals to 100. At time t equals to 100, the partial pressure of X is 400. So at time t equals to 100, the partial pressure of this, as this is the gaseous reaction, so this all will be the partial pressures of reactants and product, not the concentration. At time t equals to 100, the partial pressure of X is what? The partial pressure of X is equals to 400. So equating this to 400, so what will be the value of X? X will be 200. So at time t equal to 100, the pressure will be 200. 3 into X, that is 3 into 200, this will be 600. And for the product Z, at time t equals to 100, the pressure will be 2 into 200, that will be 400. Similarly, calculating the same data at t equals to 200. At t equals to 200, the partial pressure of X is 200. So this is 800 minus 2x, 800 minus 2x, that is partial pressure of K in terms of X is equals to 200. So what will be the X value of X for time t equals to 200? This will be 300. So at time t equals to 200, the partial pressure of X, capital X will be 300, and product Y will be 3 into Y, that is 3 into 300, this will be 900, and Z will be 2 into X, that is 2 into 300, that is 600. Now we have the values of reactants and product pressure at different times, that is at time t equal to 100 and time t equals to 200. Now using these values, let us calculate the rate constant for these two different times. Rate constant K at time t equals to 100 will be K equals to 2.303 upon T. Here, as the pressure data is given, so this will be log P0 upon Pt, initial pressure upon total pressure. So this will be at time t equals to 100, this will be log 800 upon
initially the pressure of A was 800, and then at time t equals to 100 the partial pressure of reactant X was 400. So this will be 800 upon 400. So value of K comes around 6.93 into 10 raised to minus 3. Now let us check this rate constant value for time t equals to 200. If we get the same value of rate constant, that means it is a first order reaction. Because for first order reaction, the rate constant is a constant value. So at time t equals to 100, at time t equals to 200, log P0, that is initial pressure of reactant A, that is 800 upon pressure of A at time t equals to 200. At time t equals to 200, what is the partial pressure of A? It is 200. So it will be 800 upon 200. And the rate constant value comes here also same. It's around 6.93 into 10 raised to minus 3. So we realize that K remains constant here. So we predict that it is a first order reaction. So the order of the reaction is 1. Order of the reaction is 1. So we have calculated the first part. Now the second part, that is calculate the rate constant. So we have already calculated the rate constant. It is 6.93 into 10 raised to minus 3. Now the third part, time taken for 75% completion of reaction. If 75% reaction is complete, what will be the rate time? So K will be what? K equals to 2.303 upon let T into log 8 initial, assuming that initial the reactant has 100, and if 75% reaction is complete, so this will be initially if it is 100, then 100 minus 75 it is complete, so this will be A0 upon A0 minus X, initial concentration upon initial concentration minus X, that is how much of reactant X is converted to product. As 75% reaction is complete, so this will be 100 minus 75. So from this we can calculate the T, that is time required for 75% completion of reaction. This will be log 100 upon 25. This will be log 4, and the value of T will be, from this the value of T will be 2 into 10 raised to 2 minutes. So this is the third part. Now the fourth part is the total pressure when partial pressure is 700. The total pressure when partial pressure of X is 700. So partial pressure of X, that is 800 minus 2x. 800 minus 2x. So 800 minus 2x's value is given to us. At certain time it is 800 minus 2x is equals to 700. So this will be partial pressure of A at certain time. Partial pressure of X at certain time is 800 minus 2x, and its value is 700. So what will be the value of X here? This will be 2x equals to 100. That means X will be 50. So when X is 50, what will be the total pressure? The total pressure will be the sum of the pressure of X plus pressure of Y plus partial pressure of X, Y and Z. So at t equals to, when X value of X is 50, so this will be at any time t. At any time t, the pressure is 800 minus 2x, 3x and 800 minus 2x, 3x and 2x. So value of X is what? Value of X is 50. So the total pressure is, this will be 800 plus 3x. So the total pressure value will be, putting the value of X as 50, where X is the amount of reactant converted to product. So the total pressure will be 950 mm. Thank you.